और बाकी सबको बांट रहे हैं ना जी. Should we start? धन्यवाद. आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी श्री पी चिदम्बरम जी और श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी यहाँ मौजूद हैं. फर्स्ट यू विल. सबसे पहले मैं चिदम्बरम साहब को आग्रह करूंगा कि वो इंग्लिश में अपना वक्तव्य रखें. Good evening to all of you. There's a very brief opening statement, and I shall confine to reading that statement. Copies will be distributed to you in a short while. The judgment of the Honorable Supreme Court in the cases concerning the abrogation of Article 370 of the Constitution has decided many issues, but has left open some issues that are also vitally important. It is also held as ultra vires the manner in which Article 367 was invoked to amend a part of Article 370. Hence, the judgment needs careful study. It is a 476-page judgment, which was uploaded about half an hour ago. So we need to study the judgment very carefully. Prima facie, we respectfully disagree with the judgment on the manner in which Article 370 was abrogated. We reiterate the CWC resolution of 6th August 2019 that Article 370 deserved to be honored until it was amended strictly in accordance with the Constitution of India. We are also disappointed that the Honorable Supreme Court did not decide the question of dismembering the state and reducing its status to 2 union territories. That question has been reserved for adjudication in a suitable case in the future. The Indian National Congress has always demanded the restoration of full statehood for what has become the Union Territory of J&K. We welcome the Supreme Court's verdict in this regard. Full statehood must be restored immediately. The aspirations of the people of Ladakh must also be fulfilled. We welcome the Honorable Supreme Court's direction to hold assembly elections. However, we believe that the elections should be held immediately, and there is no reason to wait until 30 September 2024. When elections are held, the people of Jammu and Kashmir will have an opportunity to express their views on the crucial questions that were debated in the Honorable Supreme Court, an opportunity that has been denied to them so far. Since accession, Jammu and Kashmir was and is an integral part of India. The people of Jammu and Kashmir are Indian citizens. We reiterate our resolve to work for the security, peace, development, and progress of Jammu and Kashmir. My friend Dr. Singhvi will speak in Hindi. धन्यवाद दोस्तों. मेरे मित्र ने आपको संक्षिप्त में अपना वक्तव्य रखा है. कैन यू हियर मी नाउ? दोस्तों, मेरे मित्र ने अपना पक्ष एक वक्तव्य में रखा है. मैं 370 की बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं सीधा एक मुद्दा उठा रहा हूं कि कैसे खत्म किया है लोकतंत्र और कैसा बना दिया है हाल. कब करेगी भाजपा
जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का बहाल, ये सीधा एक मुद्दा है। कब तक आप रिमोट कंट्रोल सरकार चलाना चाहते हैं? आज 2014 के बाद वहाँ चुनाव नहीं हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। 2018 के बाद 5 साल से जब चुनाव ड्यू थे नहीं हुए हैं। तो मैं ये मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी नॉट ऑटोक्रेसी is the demand of every citizen of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir has been run by a selected government for almost or over half a decade, not by an elected government. Why the BJP is afraid of an elected government? एक अजीब विरोधाभास है इस निर्णय में। निर्णय उच्चतम न्यायालय का है, हम सब नतमस्तक हैं इसके नीचे, लेकिन हमारा हक है नागरिक के हैसियत से आपके समक्ष स्टेटहुड के मुद्दे पे एक विरोधाभास बताना। वो विरोधाभास ये है कि एक तरफ तो ये कहा उच्चतम न्यायालय ने कि हम निर्णय नहीं करेंगे वैधता, वैलिडिटी कि आपने स्टेट को यूटी कैसे बनाया। स्पष्ट एक्सप्रेसली कहा है कि हम ये मुद्दा खुला छोड़ रहे हैं, हम ये निर्णय नहीं कर रहे हैं कि ये संवैधानिक रूप से वैध है या अवैध है कि आपने एक प्रदेश को यूटी बनाया। और दूसरी तरफ ये विरोधाभास है, बहुत गंभीर संवैधानिक विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि जो आपने लद्दाख को प्रदेश से यूटी बनाया वो वैध है। अब मैं इस पर तकनीकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक विरोधाभास बता रहा हूं। संविधान के अनुच्छेद 3 में आप किसी प्रदेश के एक हिस्से को यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, एक प्रदेश के कुछ हिस्से को 2 प्रदेश बना सकते हैं, 3 प्रदेश बना सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है अनुच्छेद 3 में कि कुछ न कुछ भाग उसका प्रदेश रहना चाहिए, वो यूटी पूरा नहीं बना सकते आप। अब इस निर्णय में जो विरोधाभास है वो ये है कि आपने पूरे इलाके को यूटी बना दिया, 2 अलग अलग यूटीज, और एक यूटी के बारे में आपने कहा कि हम ये निर्णय अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको आश्वासन मिला है कि निकट भविष्य में ये प्रदेश बन जाएगा वापस जम्मू और कश्मीर, और दूसरे के बारे में कहा कि हम होल्ड कर रहे हैं कि ये वैध है। तो जब तक एक हिस्सा इस बड़े इलाके का प्रदेश नहीं है, जहां की लोकतंत्र गणतंत्र प्रदेश का है, तब तक अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भी ये वैध नहीं हो सकता। ये एक बड़ा गंभीर एक विरोधाभास कह लीजिए, संवैधानिक गलती जो दिख रही है निर्णय में। दूसरा, एक तरफ तो सरकार के आश्वासन को माना गया है और दूसरी तरफ उस आश्वासन के आधार पर सितंबर अगले वर्ष की तिथि दी गई है जिससे पहले चुनाव करने हैं। लेकिन उन चुनाव के पहले ये डिसाइड नहीं किया कि आज तो वहाँ प्रदेश है ही नहीं। जो सितंबर वाले चुनाव की हम बात कर रहे हैं वो प्रादेशिक चुनाव है, यूटी चुनाव की बात नहीं हो सकती। तो एक ऐसी तिथि दी गई है आश्वासन के आधार पे कि चुनाव होंगे स्टेट की तौर पे, प्रदेश की तौर पे। लेकिन आज इस निर्णय किया है कि हम निर्णय नहीं करेंगे। ये दूसरा विरोधाभास है। हम ये पूछते हैं सीधा कि आप इसको कब तक, इतने समय तक, आप तो उच्चतम न्यायालय की हियरिंग के दौरान भी इसको घोषित कर सकते थे, प्रदेश बना सकते थे, कब तक रिमोट कंट्रोल सरकार चलाना चाहते हैं? क्यों रिमोट कंट्रोल सरकार चलाना चाहते हैं? किस बात से आप डरते हैं? और इसको उस संदर्भ में देखना है कि जो आर्थिक इंडिकेटर्स हैं उस प्रदेश के, मैं सिर्फ आपको 3 आंकड़े दूंगा। मेरे साथ एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध आर्थिक शास्त्री भी बैठे हैं, अर्थशास्त्री भी बैठे हैं, लेकिन 3 आंकड़े हैं कि वहाँ का बेरोजगारी का दर 18.3% है और राष्ट्रीय एवरेज औसतन है 8%। अगर आप इस 18% बेरोजगारी को और ध्यान से देखें तो अर्बन जो है, शहरों में, वहाँ पर एक छोटे अल्पायु के एज ग्रुप में 30% है, 30%, 29.8%।
और महिलाओं में 51% है अर्बन एरियाज में। तो ये आप अपनी डुगी बजाते रहते हैं हमेशा, ये सच्चाई है। और आप लोकतांत्रिक सभी इंपल्सेस को घुटा रहे हैं, वहां पर चलने नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा और आंकड़े हैं कि वहां का जो विनिवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो 21-22 और 20-21 के तुलनात्मक रूप से काफी कम है। मेरे पास आंकड़े हैं, 21-22 में 376 था, 20-21 में 412 था और 17-18 में 840 करोड़ था। ये एक वर्ष का विनिवेश बता रहा हूं मैं। तो अगर आप 17-18 से लें, और मैं मान रहा हूं कि कोविड है, वहां पर ये सब हुआ है, 17-18 के विनिवेश 840 के आंकड़े के बाद 21-22 का आंकड़ा 376 है। तो आप ये कितनी डूंगी बजाते हैं अपनी, कितनी अपनी तूती बजाते हैं, सच्चाई ये है। दोस्तों एक चीज और मैं अपनी बात अंत करूंगा। बार बार आप 2019 से कह रहे हैं, आज 4-4.5 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो जाएंगे अगले वर्ष, 4.5 हो गए, 219 से कह रहे हैं, 2019 से। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से जून 2021 को कहा था कि हम प्रादेशिक स्तर करने वाले हैं। अभी 2023 की शुरुआत में जब 13 राजनीतिक पार्टियां मिली तो उन्होंने कहा कुछ ही चंद महीनों में हम करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो ये डिनायल होगा गणतांत्रिक लोकतांत्रिक चीजों का। उच्चतम न्यायालय ने लिखा है इस निर्णय में, आज वाले निर्णय में, आई कोट, direct elections to the legislative assemblies, which is one of the paramount features of representative democracy in India, cannot be put on hold until statehood is restored. उसके अलावा आपने कई बार ऐसे वक्तव्य दिए हैं, लेकिन आप इसको डिले कर रहे हैं, विलंब कर रहे हैं। इस विलंब का कोई औचित्य नहीं है और कोई सार नहीं है। मैं कम से कम अपनी बात पूरी तरह से इस राज्य और यूटी स्टेटस और विरोधाभास के बारे में कहना चाहता हूं, लेकिन जो हुआ सो हुआ। आपको तुरंत, वो एक बाहर की समय सीमा है, इसका मतलब नहीं है कि आप सितंबर में करेंगे। उस समय सीमा के बहुत अंदर आप कर सकते हैं, करना चाहिए और आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। We'll take a few questions, if you have any. धारा 370 हटने के बाद कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, जिसमें कहा गया था कि धारा 370 को लेकर के हटाए जाने पर हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन सवाल प्रक्रिया पर है। जो प्रोसेस अपनाया है केंद्र सरकार ने, वो सवालों के घेरे में है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। The Supreme Court has held that one modification made to Article 370 using the interpretation clause Article 367 is ultra vires. Nevertheless, the Supreme Court has held that the abrogation of Article 370 using the power under Article 370 is valid. As I said, we have to read the judgment very carefully before we can comment upon the judgment. It is the judgment of the Supreme Court. All of us are bound by it. But prima facie, we are saying that we respectfully disagree with the procedure followed. Even in the CWC resolution, you will mark those words. We said that Article 370 must be honored until, underline until it is repealed or amended in accordance with the Constitution of India. Now, while acknowledging that we are all bound by the Supreme Court judgment, it's only a deeper study that will throw up the implications of the judgment. But you are right. At the moment, the verdict of the Supreme Court is that Article 370 was amended in accordance with law. So my question is to both Mr. Chidambaram and Dr. Singhvi. Sir, during the debate on the two Jammu Kashmir related bills in the Lok Sabha, from Union Minister Amit Shah to a number of BJP MPs, they have claimed that in these years, after it was turned UT and a rule was applied, governor started ruling it,
there's a significant improvement as far as the security situation is concerned, as well as the economic situation is concerned. Would you like to talk about it, and what is your view on this? Well, both of us are members of the Rajya Sabha, so we didn't have the opportunity to listen to his intervention in the Lok Sabha. But the data shows that terrorist incidents, killing of terrorists, killing of security forces, and other incidents continue unabated in Jammu and Kashmir. That is the data. I don't have the data with me, but that data can be accessed. Whether the economic situation of Jammu and Kashmir is improved is for the people of Jammu and Kashmir to say. Has unemployment decreased? Has per capita income increased? So they will have an opportunity to deliver their verdict when elections are held. So that's why we urge that elections should be held early, and the opportunity that has been denied to the people of Jammu and Kashmir so far to express their views must be made available to them as early as possible. And once the people of Jammu and Kashmir express their views, that will bring an end to the debate. So one of the BJP spokesperson has made a claim, and he has said that in 2012, when Dr. Manmohan Singh was there, he had appointed 3 interlocutors who have submitted a report, and they have recommended to change the word temporary into special, making the Article 370 as a permanent one. Your comments on that, sir? That report was not formally accepted by the government or made public or acted upon. That is the view of the interlocutors who traveled throughout the length and breadth of Jammu and Kashmir and gathered the views of the people, and they gave a report. No decision was taken on that, those recommendations. They also made several other recommendations, by the way. सर जी सर, मेरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या 370 पर जो बहस थी, आप मानते हैं कि वो खत्म हो गई है, या ये गुंजाइश खुली हुई है कि अगर कांग्रेस को मौका मिला 2024 में सरकार बनाने का, तो अब आप वापस 370 को रिस्टोर करेंगे जम्मू कश्मीर में? No, we have never asked for restoration of Article 370. Please read our CWC resolution. We say it must be honored until it is amended in accordance with the Constitution. That was the position. बहस सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का I've फैसला आ answered- चुका I've है, answered तो your मैं पूछ friend. रहा हूं क्या ये बहस भी खत्म होती है क्या? 370 का मुद्दा अब खत्म होता है एक तरीके से? I have answered his question. As we speak today, the Supreme Court has held that Article 370 was abrogated in accordance with the Constitution. That is the law of the country. And all of us are bound by the law of the country. But we can have opinions, but that is the law. But sir, the court observed that the temporary nature of the proviso is in itself sort of makes it easier for any, or should have been considered by any government to take a final decision and deal with it instead of just keeping it this long. The provision itself was temporary, so. That's correct. The court has held that the provision was temporary. I don't think there was any debate that the provision was temporary. The debate at that time was whether the temporary provision can be removed except in accordance with the Constitution. आपके प्रश्न के विषय में और संदीप भी आपके प्रश्न के विषय में और संदीप के भी प्रश्न के आपके प्रश्न का उत्तर है हाँ, उच्चतम न्यायालय हमारे संविधान के अंदर अंतिम निर्णय होता है। आज ये डिबेट खत्म हो गया है और एक चीज आप भूल रहे हैं, इन याचिकाओं में कांग्रेस किसी रूप से पार्टी नहीं है कि कांग्रेस कोई पुनर्विचार की याचिका डालेगी। अगर आप पार्टी और आप डालते हैं, ये पार्टी ये डालते हैं, वो अलग बात है।
कांग्रेस न इसमें हिस्सेदार है न पार्टी है, तो इसलिए निर्णय अंतिम है और कोई भी ऐसा एजेंडा या हमारी घोषणा कभी ऐसी नहीं हुई है कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। Yes. Sir, Shiv Sena has welcomed this decision of the Supreme Court, and even Sanjay Raut has also mentioned that we had supported the bill when it was being brought in the parliament. So there is a difference of opinion within the India Alliance. Many of the leaders have come out and they are not really satisfied with the verdict of the Supreme Court, and now it is Shiv Sena which has welcomed this verdict. What do you want to say about it? As I said, there will be many opinions. Opinion can differ from one party to another. Citizens can also hold opinions. But as my friend said, the law is as declared by the Supreme Court. After the law is declared by the Supreme Court, you can still have opinions. आप देश के वित्त मंत्री रहे हैं लंबे समय तक और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि देश के बड़े अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं, तो आपके एक सांसद के घर पे 350 करोड़ की बरामदगी पर आप क्या कहेंगे? इसका विस्तार से I thought I have not seen 350 crores in my life. In fact, if you ask me how many zeros are there, I'll have to count. The Congress party has clearly said that the party has nothing to do with the cash that was seized. And only Mr. Sahu, the gentleman allegedly concerned, has to explain the position. The Congress party has nothing to do with the seizure of cash allegedly belonging to an individual or his business. We only run a party where there is a party and there are members of the party for political purposes. We are not concerned about the business of an individual. He will explain when he chooses to explain. Thank you.